Even though for me it's just a 5:30 now in the morning, but I request everybody to switch on the camera, guys, please. Please Thank you. switch on the camera. And if you're having any tea, breakfast, that's fine for me. You can continue. Rishabh, Akshay, Chandan, Anusha, Ishika, Swati, please switch on the camera, guys. Okay, sir, over to you now then. Hema ma'am? Yes. Yes. So can we? I think we should start now. Yes, ma'am. Yes. Yeah, we welcome you, sir, Atul Grover. He's the senior business consultant, DXC Technology, London, UK. It's my privilege to introduce Atul Grover to the audience. He has a bachelor degree from Kurukshetra University. His master is from Tilak Raj Thadda Chennai, sir. Institute of Management and Technology. He has a PhD from Chitkara University. He's Sweet. also self-employed in ServiceNow techno-functional trainer and business analyst trainer and guest speaker from 2009 to present. He has his own YouTube channel. You can just have a look. It is Learn, Grow Together with Atulji. Earlier, he has worked in Virtusa as a ServiceNow business process consultant. Input Zero Technologies. He has worked in VivoIS, Wipro, Infosys, Accenture, and many more companies, and he has more than 15 years of experience. He has successfully delivered around 50 guest lectures in deemed university and other management and technology institutes in Haryana, Maharashtra, and Delhi. He has around 3,000 plus hour experience in classroom training and in total coverage of around 5,000 plus students. So it is a privilege. He actually work as a consulting process and product design, implementation and IT services, operation and transitions in IT industry, involved in providing ITIL and IT service management solutions in IT infrastructure with expertise in ITSM suite service now. We welcome you, sir, to motivate the students for Thank you. blending design thinking with critical thinking and to foster the innovation that delivers customer centric solutions. We once again welcome you, sir. Over to you. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to share my screen, sir. Just allow me. Yes. Yep. Okay. Okay, just let me know once you're able to see my screen. I'm on the slideshow mode at point of time. In case anybody has any question, please feel free to stop me in between or put your question in the chat window. I'll be coming back on the chat window once again and we'll pick up the questions. Okay, so thank you so much, everybody, and good morning, namaste, everybody. My name is Atul Govar. Ma'am already introduced me, but a lot of things she told me about me. I'm not that much big or that much expert here. Yes, definitely, yes. From the roots of Haryana, I'm coming at point of time. I recently moved to UK for my assignment as well, and pursuing my PhD in the Pella from the Chitkara University. It is my second session with I guess with the JP Institute, definitely, because I guess in last year we had a one session October November on the innovation. Now sir says, sir, can you have expert talk on the design thinking, critical thinking, and innovation design as well with the students. I know for this session we have very limited time, so I'll not take much on my introduction. Okay, so this particular topic contains the three major terms: design thinking, critical thinking, and the innovation. The important point which is required to be understand here, that anything you want to do, you need a specific way of thinking. If you speak me from the layman example perspective or layman perspective, I say ये आपके सोचने का तरीका है, that's all. But when we go in a specific way, then our researchers, our scholars, our followers
make this term as a little formal so that everybody can start thinking on that particular perspective. So what is the meaning of the design thinking here? I would like to be go with you guys on the question answer part as well. So please ask your question if you have any doubt. Okay, sir, please stop me if you think that I'm going beyond the time, so that we can finish it this off on the time. Okay, So sure, sir. now the question comes that how these things come into the picture. Like innovation is one of the most critical part at point of time. I'm sure आप में से जिसने भी anybody who watch the Shark Tank, they found that how much important innovation is. Innovation can be anything. We will discuss this innovation in the later on part, but let's see how this thing come into the picture. So from the from I would say from the India perspective, from the universe perspective, from the world perspective, we have 17 sustainable goals, development goals, I can say, because every country say that we want to be sustained, we want to be grow, we want to move forward. But if in a family we cannot survive with our parents, with our father, mother, son, spouse, daughter, in the same manner, a country cannot survive or cannot progress alone. Every country need the support from the other countries as well. So to make this thing possible, and they call it as sustainable. The word sustainable has a very much importance here. I can build something which can be destroyed tomorrow. We have to build something which can be long lasting and can be used by the generations and generations and the generations. According to me, our sanskars, our religion terms, our religious stories, our religion's hero are the sustainable till date. But unfortunately, we're losing them now. Maybe I know, my next generation know, but their next generation know. We are not sure because we're not passing them. We're just keeping them and say, hey, you go and study. That's all. No need to be go and do all these things here and there. You go and study. So now the same thing apply for us, that how we can sustain in this world. And to do that part, these world organizations set up a 17 goal, which includes innovation as well as a ninth goal. You can see here. Ninth goal is the innovation. It says industry, innovation, and infra. It means in this domain, we have to be do something so that we can start progressing from the industry perspective and our infra. Like everybody know that after some time, maybe the petrol is going to be over. We are moving from petrol to diesel to electric cars. And now recently some lithium is also coming into the picture. Why this? Because those are the sustainable part. Not sure, but these are in that particular direction, that we have to find out some ways those can be sustainable. So we are going to be discussed mainly on the ninth goal, and in the ninth only one word will take the innovation. Now to do the innovation, we have to be start thinking in a manner. I'm a kid of the 7 years now. Okay, when he was 3 or 4, he always tried to build something. I remember that when I took my design thinking training, so there was a exercise given to everybody or every team in the room, that with the help of the marshmallow and with the help of the sticks, not sticks, it's a like the noodle sticks, straight noodle sticks, you have to build the tower and tower and tower, how long you can build that tower. And almost people will fail. This is the first concept come in the design thinking. So let's discuss about a little bit on that process. No need to be worried about the presentations. These all are the copy pasted, and thank you so much for everybody who put this particular content on the freely available on the internet, so that people like me can take up and discuss and understand this part. So design thinking, in a simple word, let me come back here. Sometime I did not come on the screen. I feel that I'm just talking. Design thinking and the critical thinking. Important point we have to be remember that it is the way of thinking. आप सोच कैसे रहे हैं इस पर डिपेंड करता है. You can go in the positive, you can go in the negative as well. Take example of Uber. Take example of Ola. Take example of Oyo. What the guys do? The guys think in a perspective so that they can build a business. वो लोग हमारे जैसे ही हैं, but the way they are thinking is little different. And that is something we can include here called the design thinking or the critical thinking. Both are the two different terms. Okay, let me add one more term. When I was reading this, even
I got trained in that part as well. That is called the system thinking as well. So design thinking, critical thinking, and system thinking. Now maybe someone says, "Sir, come on, हम सोच नहीं पाते ढंग से पेपर में लिखते हुए, आप कह रहे सिस्टम थिंकिंग भी करो." This is what we have to be understand. हम लोग करते हैं, we are doing these things. Everybody is doing these things, but we don't know that how formally we can make it. So now let's say, what is the design thinking say? It is an ideology supported by a company process. आपका आइडिया है और उसको एक प्रोसेस के साथ आपने ऐड कर दिया. That is the what design thinking say in the layman example. Someone sitting in India, someone sitting in US thinking यार इंडिया में ना कैब्स की फैसिलिटी नहीं है. That was his idea or her idea. And they make a process. Process means let's think something on that process, that how people can book, how people can get offers, how people can get benefits. That's all. And now we can see Uber, Ola are the examples of that only. So it is an ideology, what idea you have. Maybe it is also said in the design thinking, maybe in the beginning your idea can be feasible or not feasible. हमें वो नहीं सोचना कि यार मेरे पास आइडिया आया, मेरे पास आइडिया, मुझे चांद पे जाना है, मुझे चांद पे जाना है ताली बजा के, ये मेरा आइडिया है. नाउ इट इज अ feasible or not feasible, that is the second part, but आइडिया आपके पास होना चाहिए. These things come in the steps of the process of the design thinking. So when you put your ideology with the process, it become a design thinking. और आपको दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आइडिया का भी और प्रोसेस का भी. लेट्स से मैं घर पे अकेला हूँ, मेरी वाइफ गई काम पे, मेरा बेटा स्कूल में गया, मुझे ना यार मैगी बनानी है, सिंपल. नाउ आई हैव आइडिया कि मुझे मैगी बनानी है, बट इफ आई नो द प्रोसेस और आई हैव अ प्रोसेस एंड आई कंबाइन देम, इट बिकम अ डिजाइन थिंकिंग फॉर मी. सिंपल, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज वेरी वेरी नॉर्मल एग्जांपल. सो द डिजाइन थिंकिंग आइडियोलॉजी assert that a hands-on यूजर सेंट्रिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर. मतलब कि आप उस तरीके से सोचो कि आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो खत्म हो जाए. ठीक है, आई गिव वन एग्जांपल, नॉट श्योर दैट हाउ ट्रू दैट एग्जांपल. Approximately a month back on the LinkedIn, I found there was a video which says now specifically women no need to be worried about the birth of the baby. You can have an artificial womb, and in that particular womb the child will take a birth. You can sit at your home, you can see on the camera that how the things are going. Maybe it is the design thinking, it is the innovation, but is that innovation in the right direction? Tough to be answered. So I read the comments as well. A lot of people say, please don't do this thing. You are violating the natural process. You are violating the natural things which is given by God, and that is again against the innovation law. It's against, but still we people do, because we are the human beings. We want to get famous. Okay? So now let's come here. So it is a assert that's on hands-on user-centric approach for the problem solving can lead to the innovation. हमारे घर टीवी थे, एग्री. ब्लैक एंड व्हाइट थे, एग्री. दे कन्वर्टेड ब्लैक एंड व्हाइट टू द कलर्ड वन, फाइन. फॉर्मेट वही था, वही स्क्रीन थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन, पीछे पीछे द ट्यूब्स वर देयर. बट व्हाट दे इंट्रोड्यूस, कि मैं रजाई में बैठा हूँ, रात को 11-12 बजे है, सर्दियों के दिन है, मूवी आ रही है, शोले मूवी चल रही है मूवी पे, एंड आई नीड टू बी गो एंड स्विच ऑफ द टीवी. We normal people think, अरे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं. बट व्हाट द नॉर्मल अदर पर्सन विल थिंक, नहीं, इसको रजाई से निकलो, वहां जाओ, टीवी का स्विच ऑफ करो और फिर जाके सो जाओ. एंड देन वी बिल्ड द रिमोट, टीवी रिमोट्स. It is the innovation, because they remove they done the problem solving for the user centric approach. AC the good, AC was good, but we need the remote. We build the remote. I'm sure that everybody who is be there in a young generation, and we have a coolers, our water coolers at our house. अब रात को अगर कूलर बंद करना है तो सब किसी को उठना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा डायरेक्टली, या फिर वहां से जो कूलर की विंडो पे लगा था वहां से बंद करना पड़ेगा. बट नाउ वी आर द स्मार्ट कूलर्स. रिमोट है आपके पास, आप लेटे हुए, आप रिमोट बंद करते कूलर बंद हो जाएगा. दैट्स ऑल. व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन. बट टू डू दैट इनोवेशन, they have a design thinking on that particular part. This is important, and design thinking goes in the 6 phases. It's a process. It is a process. Like
if I'm saying you are in the year 1 and you want to go to the year 2, then you have to be clear the attendance, you have to clear the class exams, you have to clear the class tests, you have to go for the midterms, and then you go for the final exams, and then you are going in the year 2. So let's understand this part. So design thinking cover mainly these 3 areas: desirability, feasibility and viability. यहां पर अपना कंसेप्ट आता है कि भैया ये होगा कि नहीं होगा, and where these 3 things met, here you done your job. Simple meaning desirability, what a human being need or how this makes sense to the people. Number 1, again I'm taking example of Uber or Ola. They think if I introduce the cab facility for the people, that how it make it sense to the people, will they use or not? This is what the desirability need hai logo ki, because I know that how who will carry these heavy bags and go in the auto to the airports or to the I can say the railway stations. Let's introduce the cab. कैब में आपको एसी मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप रेडियो सुन सकते हो गाने में, किसी की चिक चिक नहीं है, शीशा बंद किया हो क्या. This is what they put as a desirability. Then feasibility, how much it is possible for the technical perspective. मुझे चांद पे जाना ताली बजा के, is it possible or not? Nobody know before that when we see the Mr. India concept कि एक ऐसी घड़ी भी होगी जिसको आप पहनोगे, बटन दबाओगे, आप गायब हो जाओगे. Right? Yesterday or day before yesterday, I was seeing one episode of Jaspal Bhatti, and people, and generally I watch the this YouTube as well, but I interested to read the comments what people put, क्योंकि वहां से ना आपको ideas मिलते हैं. So someone says it was something on the Jaspal Bhatti was making his on this political party, and they use a lot of concepts, and someone says that Jaspal Bhatti think ahead on the time. जो आज हो रहा है वो सोच के कर चुके, काम करके जा चुके हैं. This is what the feasibility specifically I can say. But here it is a technical feasibility, because nowadays we're in the technical era, we're the technological person. बिना इंटरनेट के हमारा दिन नहीं चलता. And last is a viability. What is likely to become part of sustainable? See again, हमें ऐसे सोचना है कि वो सस्टेनेबल हो. Why we ask our kids, why we tell to our kids, जब वो पैदा होता है थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना है, because this is what sustainable for them. अगर उनको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, then they have to be follow this principle, and here it come the viability. बेटा खाना प्लेट में नहीं छोड़ना है, किसी से नहीं लड़ना है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है. Why? Because if they do this thing, they can sustain these things for a long time and they can become a good human being. But technically, because वो हो गया, वो हमारे घर पर है, वो प्रोडक्ट नहीं है हमारे. They are our generation, they are our kids, they are human beings. But we have to make something from the sustainable business model. I'll give an example again from the Shark Tank, because these things are important for us to be understand. There was a person in the Shark Tank came and he said that he know some kind of techniques. If you close your eyes, you can remember a lot of things and you can read a lot of things. I will not pick up the name and other things on that, but if you get a chance, it's a shorts was available on the Facebook or in the, I guess, in the YouTube. But one of the sharks says, sorry, I'm out of this particular concept, because for him it was not sustainable. Now, if you want to grow, if you want to spend, or if you want to invest anything in the money, please make sure that this model should be sustainable. लंबा चलने वाला होना चाहिए. This is the basic principle of innovation at point of time. मैं भी build कर सकता हूँ. I have a capability, I have a capacity, I have a good mindset. But will it be sustainable? ये depend करता है. So this is for to do this part. Now researchers say, let's combine the words, combine the terms, and give a thought to the everybody. Please start thinking in the sustainable part. And this is what the design thinking includes. Empathize, define, ideate, prototype, and test. इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं करते. हम सब कुछ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. I'm giving a practical example. अगर मैं आपको बोलूं ना कि यार मुझे चीटिंग के लिए पर्ची बनानी है, तो हम ये सारा काम करते हैं. हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है.
इसको कैसे सॉल्व करें, हम आइडिया लगाते हैं, उसका सैंपल बनाते हैं, उसको टेस्ट करके देखते हैं। टेल मी, आई कैन यू कैन गिव मी 100 एग्जांपल्स जो आप जो दिन भर में करते हैं, दिस ऑल आर द दिस पर्टिकुलर थिंग्स। व्हाट एम्पैथाइज से डिस्कवर व्हाट अ यूजर नीड। रिमेंबर कि मुझे क्या चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। बिजनेसमैन ने यही सोचा, मे बी फ्रॉम द रिलायंस, द फाउंडर्स ऑफ रिलायंस, और आई कैन से जियो के जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने इसको प्रोग्रेस किया, दे हैव दिस थिंकिंग ओनली कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। ही बिल्ड दैट कंसेप्ट एंड पुट इट फॉर अस एंड ही डिफाइन द प्रॉब्लम, डिटरमाइन द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, कि नीड क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है। हो सकता था इंटरनेट के वो पैकेज बना के भेज देते, बट नहीं, they put free internet for everybody. Someone says me, Atul, you know how much data I have internet? I said, how much? He says 50 GB. I said, भाई इसकी रोटी बना के खाएगा क्या? Right? Because प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इतने डेटा का क्या करेगा? डेटा होना चाहिए, डेटा ठीक है, डेटा होना चाहिए, दैट इज ओके टू सर्वाइव। देन आइडिएट, ट्राई टू बिल्ड द पॉसिबल सॉल्यूशंस। इट कैन बी वन, इट कैन बी मल्टीपल। मुझे भूख लग रही है, मुझे मैगी बनानी है। नाउ आइडिएट करते हैं इसको, पहले मैगी उबालेंगे, पहले सब्जी उबालें, a lot of things. So you have to be define the possible solutions, and design thinking say only these things. Go as much as possible solution you can go, as much. ये कभी मत सोचना कि किसी कोई क्या सोचेगा मेरे सोल्यूशन के बारे में। अगर यही सोचा होता तो शायद आज उबर एग्जिस्ट नहीं करता। There's a guy MBA चाय वाला, अगर वो ही सोचता कि नहीं मैं MBA करने में चाय बेच रहा हूं, तो वो शायद इतना ग्रो नहीं करता आज के टाइम में। So he find these solutions and then prototype, simple models create करिए उसके, maybe with the help of the materials or maybe on the pen and paper you can do it, and then test it. Yesterday I was seeing a video of the Lego, Lego. Lego is a company who make this blocks जिससे बच्चे अलग अलग तरह के टॉय बनाते हैं, right? So I was checking their some website and I found one video that how they test when they build a big Legos, और उसको जब वो ट्रांजिशन करते हैं, how they test it. They put that Lego in the box and they drop it. They kick them, they pull them, so that they make sure that anywhere when they travel in the boxes, it should not be destroyed and it is to the customer on a very safely. This is what the testing part says. हमारे क्लास के टेस्ट यही होते हैं। इट इज अ प्रोटोटाइप फॉर द फाइनल एग्जाम, कि भैया बच्चा फाइनल एग्जाम में फेल होना चाहिए, इसलिए योर टीचर्स कंडक्ट दीज थिंग्स एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। एंड इन द लास्ट विल क्लोज दिस पार्ट ऑफ द डिजाइन थिंकिंग हियर ओनली। दिस आर टू वेज, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर मतलब कि एक सीक्वेंस में यहां से चले, यहां चले, यहां चले, यहां चले, यहां चले। एंड नॉन लीनियर मीन्स you can move back at any point of time. Empathize say you have defined something and then you go to the ideate, you go to prototype, you go to test, and from test you go back to the here as well. From test you can go for the ideate as well. From prototype you go back to the here as well. And from test you can go to define. What is the meaning? Simple meaning, अलग-अलग steps पे हमें अलग-अलग feedback मिलता है, and from that feedback we progress. I still remember when I started participating in the culture programs, I go for this poetry competition. Okay, so generally we have to be revise these things a number of times so that we can stand for a good competition. So first time I show to my teacher, she said good poem, please refine it a little bit more. Second time I गया उसको refine किया, I again show them, हाँ ठीक है, बट अगेन दीज वर्ड्स नीड्स टू बी लिटिल बिट मोर एक्यूरेट। फिर मैंने उसको चेंज किया थोड़ा सा, उसको और याद किया, उसको पक्का किया, उसको पॉजिंग करी, देन आई गो बैक अगेन आफ्टर 2 days, मैम भी रेडी हो गया, नाउ यू कैन सी। हाँ अतुल ठीक है, बट थोड़ा सा आई एम स्टिल फीलिंग समथिंग रॉन्ग, योर वॉइस शुड बी वेरी वेरी लाउड हियर। ठीक है, मैंने उसको करेक्ट किया। मैंने आई गो विद द लाउड वॉइस, इशे नो नो ये तो बहुत चिल्ला रहे हो, ऐसे नहीं, इसको वर्ड्स को थोड़ा सा अप एंड डाउन करके देखो। सो इन द सिंपल मीनिंग, in the design thinking non-linear process, we go and we can move back any place. Linear हमेशा सीधा रहता है,
नॉन लीनियर आप कभी भी वापस जा सकते हो उसमें से घूम के, क्योंकि आपके पास फीडबैक मिलता है. दिस इज व्हाट द पर्पस. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग द सेमेस्टर वाइज, क्योंकि बहुत सिलेबस हो जाता है. हमारे क्लास टेस्ट हमें यही बताते हैं. Our class tests are the non-linear. Maybe in a first month we have a class test. मैथ्स में नंबर कम है बेटा, तुम मैथ्स में थोड़ा मेहनत करो. नेक्स्ट टाइम शायद किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है बेटा, तुम इसमें मेहनत करो. व्हाई? बिकॉज क्लास टेस्ट गिव मी टू गो बैक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि इफ आई एम गोइंग टू डू अ टेस्ट आफ्टर फाइनल, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं. So these are the things which we can do here. And what is the benefit of the design thinking as a non-linear process? It is convert a picture into reality. जो आपके माइंड में है ना, वो आप पिक्चर में देखना शुरू कर देते हो. Maybe you're not able to build 100% at point of time. जितना है उतना ठीक है. It will help you to know the market. जब आप यहाँ पे जाते हो ना प्रोटोटाइपिंग में टेस्ट पे, आपको मार्केट समझ में आता है कि वो कौन लोग हैं जिनको मुझे अप्रोच करना है. एंड नॉट बी फुल प्रोडक्ट. हो सकता है आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट स्टिल यू कैन शो देम कि भैया ऐसा बन के आएगा मेरे पास प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट द डिजाइन थिंकिंग सेज. लेट्स टेक अ मिनट एंड एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. प्लीज डोंट फील कि आपके टीचर्स क्या सोचेंगे, उनके लिए तो है नहीं वो. ये सेशन आपके लिए एक्सपर्ट टॉक. स्वाति, साक्षी, आशीष, ऋषभ, जतिन, 44 people plus I guess 9, approximate 50 plus people are there now. Any question, anybody? चलो ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ. गुड. नाउ लेट्स कम टू द क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहां पे ना चीजें बदल जाती हैं. डिजाइन थिंकिंग से वी गेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, अगर लेट मी ट्राई टू कंबाइन और नॉट कंबाइन, लेट मी ट्राई टू इंटरलेट दीज कंसेप्ट्स. ठीक है, बट क्रिटिकल थिंकिंग में ना थोड़ा सोचने का नजरिया और चेंज हो जाता है, बिकॉज इट सेज दैट यू डू द एनालिसिस ऑन द 4 points: फैक्ट्स, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड आर्गुमेंट टू फॉर्म अ जजमेंट. कोर्ट्स में यही होता है. फैक्ट्स प्रेजेंट करो, एविडेंस प्रेजेंट करो. फैक्ट्स का प्रेजेंट होता है, फैक्ट्स प्रेजेंट होता है जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्चेस. एविडेंसेस रिसर्चेस में जाते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं एंड आर्गुमेंट करते हैं टू मेक अ जजमेंट. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल. देयर इज अ पेशेंट हु इज लाइंग ऑन द बेड नाउ. व्हाट नर्स इज डूइंग? शी इज नॉट डूइंग द डिजाइन थिंकिंग, शी इज डूइंग द क्रिटिकल थिंकिंग. She examined that particular patient completely and then make a decision कि इसको कौन सा इंजेक्शन या कौन सा डोज या कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट इसको भी देना है. This is what the critical thinking, and we do. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. I'll give one example and that is again coming on the basics. आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको 1000-2000 का नोट पड़ा हुआ गिरा हुआ मिला. Now what you do? This is what the critical thinking come into the picture. Because now you are going to be start कि क्या मुझे इन 2000 की जरूरत है. This is what facts you are going to do. Evidence कि ये असली है नकली है. Observation, लोग आपको देख तो नहीं रहे. ये मेरा मन मुझे कह रहा नहीं यार रहने दे, उठा ले मंदिर में डाल देंगे. नहीं मेरा मन कह रहा है यार आज फ्राइडे पार्टी, रात को काम आएंगे. एंड आर्गुमेंट, पीपल से नहीं ये तो चोरी होती है. It's not yours. This is what the critical thinking come into the picture. So when you are doing a thinking, and again I'm telling you, this is a fancy concept which come in the format now. That's all. Everybody is doing this thing. Everybody is doing this thing in the critical thinking. If I give a problem statement, then you do this thing. Critical thinking is again, इसमें one benefit is that it is self-directed, self-disciplined, and self-monitored, self-corrective, and one more thing I want to add, self-motivated. इसमें सारा कुछ सेल्फ है. सारा कुछ आपको ही करना है, कोई आपको गाइड नहीं करेगा. आपके पास जो फैक्ट्स हैं, आपके पास जो एविडेंसेस हैं, आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं और आपके पास जो आर्गुमेंट्स हैं, दैट विल हेल्प इन द क्रिटिकल थिंकिंग. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज. सो जब नए कॉलेज में गए तो बोलते थे अरे यार द ड्रिंक द विस्की ठीक है बट आपको पीना है कि नहीं ये डिपेंड करता है.
आपके आपके कलीग्स, आपके दोस्त पी रहे हैं, यू आर गोइंग द मे बी कॉर्पोरेट पार्टी, इन सम पार्टी, आपके दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं, आपको पीना है कि नहीं पीना, वो यहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। आपको फैक्ट देखेंगे, यार मेरे घर में ऐसे तो कोई नहीं है, मेरे को एविडेंस याद है उसने पिया था, वो बीमार हो गया था। मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि वो पी के क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स है, नहीं नहीं पीना अच्छी बात नहीं है। कोई कोई nobody is around you who is giving you the knowledge, कोई ज्ञान नहीं बांट रहा आपको यहाँ पर। You are the only one who is directing in the format कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना। वो कहता है ना कि सिगरेट अगर एक बार हाथ में लग जाए तो उतरती नहीं है। ये क्रिटिकल थिंकिंग वहीं पे काम आती है। यू आर सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मॉनिटर्ड। आप खुद उसको चेक करते हैं कि मैंने क्या किया था, मैं क्या कर रहा हूं अभी, एंड सेल्फ करेक्टिव। आई गिव द एग्जांपल। मान लीजिए इन दिसंबर यू हैव, इन जुलाई यू हैव एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। वी हैव 4 months नाउ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जुलाई when the exam going to be start, you will do these things, you will self monitor। अरे मैं 3 महीने तो पढ़ा ही नहीं, 4 महीने मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैंने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं किया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट, आई एम from experience I'm telling you guys, when sir approached me, sir says ki sir can you do this talk on this part, and when actually I read these things I was so surprised कि सॉल्यूशन तो छोड़ो, पहले तो हमें इससे तो हम खुद ही ठीक हो जाएंगे अगर हम करने बैठे अपने आप को। बहुत चीजें जो हम करते हैं हमें पता नहीं थी। एंड इन दिस पार्ट सो यू कैन सी प्रॉब्लम, थिंकिंग एंड सॉल्यूशन, बट फॉर दिस यू हैव टू बी डू follow these 4 concepts and these 4 principles. And critical thinking includes clarity, question, identify, analyze, evaluate, create. अब देखो वही है भाई, इस दुनिया में जो भी चीज है उसका प्रोसेस तो होगा ही होगा। पढ़ने का भी प्रोसेस है, पढ़ाने का भी प्रोसेस है, लिखने का भी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस तो होगा ही होगा। लेट मी गो आउट, ओके, हाँ ये चीज है, ठीक है। सो बेसिकली दिस पिक्चर जस्ट टू टेल कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, एंड दिस इज बी टेलिंग यू कि आपको स्किल्स क्या चाहिए। बिलीव मी, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ये स्किल्स नहीं होती। ऑलमोस्ट स्किल्स वी ऑलरेडी हैव, ऑलमोस्ट। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या है? एनालाइज। इफ again the same example, if I put a 2000 rupees note in front of you, you start analyzing it. फर्स्ट थॉट आएगा कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरा एनालाइजिंग पार्ट है। देन कम्युनिकेशन, मैं पूछूंगा इससे यार उठाना चाहिए नहीं, अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई है, उठाएं या ना उठाएं। क्रिएटिविटी, मे बी यू कैन टेक इट, you can convert the 2000 in some grocery, in some fruits, in some books, and spread it. Mindedness, sorry, ये बहुत जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट वी ह्यूमन बीइंग आर लैकिंग एट पॉइंट ऑफ टाइम। हमें कोई बोल देना यार तू ऐसे करता है, हम गुस्सा मान जाते हैं, नहीं नहीं तू गलत कह रहा है, मैं तो ठीक ही हूं। दिस इज व्हाट वी आर लूजिंग। वी शुड बी ओपन माइंडेडनेस। This is important in the design thinking, this is important in the critical thinking, this is important in the system thinking, and this is important in the innovation as well. जब तक आप ओपनली नहीं सोचेंगे यू कैन नॉट प्रोग्रेस। और ओपन सोचने मतलब कि ऐसे मुंह ऊपर करके सोचने लग नहीं। ओपन माइंडेडनेस मतलब कि यू आर ओके, यू आर हैप्पी टू एक्सेप्ट द फीडबैक, एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एज वेल। I'm as ma'am told in the beginning that sir is running, I'm running my own YouTube channel as well. तो एक बार क्या हुआ, मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पिंग किया टेलीग्राम पे, hey why you are sending these videos, these are totally waste. I was so surprised, my god, first time I got this feedback, and I'm openly telling you. I said okay, I accept your feedback, but tell me how I can improve it. Then that person give me some path. You can do this thing, you can do this thing. I said, sorry, I'm not a developer. Can you help me? He said, okay, I will give you the training. And now the things have been changed for me. I had a call with him and understand his concepts, and now I'm changing my way of communicating or delivering the trainings as well. This is what the open-mindedness is required. And last, problem solving. मुझे समझ में आता है ये problem solving क्या है यार ये? It is for me, it is just a word, nothing else. Everybody can solve the problem. अगर आग लग गई, सबको पता है कि भागना कैसे है, सबको पता है।
Even being you are a human being or you are an animal or anybody has animal as well, everybody know कि भागना कैसे है. Simple. So this is what the problem solving techniques, not techniques, problem solving skills you have to be thinking. क्योंकि until unless you will not go to that particular point कि need क्या है, problem क्या है, you cannot progress further. I can give you a example here. Anybody who is thinking, sir आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हो, इसको implement कैसे करें? I tell you the example. Go to Dr. Hemant, doctor or go to Dr. Amarjeet. उनसे पूछे सर ये बताओ हमारे इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम क्या चल रही है, आपको अटेंडेंस में प्रॉब्लम आता है, आपको मार्कशीट्स में प्रॉब्लम आता है, आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है. अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड गिव अ सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट यू कैन डू इट. बाहर मैं तो कहता हूं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती, हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम है, हमारे पास ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं है. गो टू करियाना शॉप, जो भी आपके घर के पास अच्छे करियाना शॉप हो जहां जिस अंकल से आपकी बनती हो, अंकल आप बताओ आप बिलिंग कैसे करते हो, आपको दिक्कत तो नहीं होती, आपको कैश सेटलमेंट होता है शाम को नाम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती. अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड गिव देम. ये मत बोलना अंकल आप सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर तो अंकल ले ही लेंगे. व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू बी आंसर दैट पार्ट. ठीक है. सो हियर द टू थिंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकर. थिंकर मतलब कि मैं, और सोचना कैसे है. These four bases we analyze and evaluate, and with the help of these 4 points we produce the judgment or the conclusion. And I am a thinker, I have a situation which I evaluate and I give the best solution. Problem, what is another problem we are facing at point of time? Ki I read some statement and we start making a observation. Let's say कि मेरे एरिया में एक एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है 2 साल में एक एक्सीडेंट हुआ होगा, बट वी स्टार्ट मेकिंग जजमेंट, अरे यहाँ तो एक्सीडेंट होते रहते हैं. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी डिड नॉट फाइंड द फैक्ट्स, वी डिड नॉट गेट द एविडेंसेस, वी डिड नॉट ऑब्जर्व, और अपना जजमेंट हमने दे दिया. नहीं ये एरिया में तो घर मत लो यार, तो बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं. सो दीज थिंग्स वी हैव टू बी चेंज नाउ. बट अगेन in the design thinking and in the critical thinking, the main point is that user problem. If you see here, the problem statements are required here. Only then you can do that part. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं, आपके पास प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप सोचोगे भी नहीं. अगर इंसान के पास प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे एक नया प्लेनेट ढूंढना है जहां पर मैं जाके रह सकूं, तो आज हम शायद नहीं पहुंच पाते मार्स पे, ये चांद पे हम नहीं पहुंच पाते. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड वी आर थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, लेट मी कम हियर फॉर अ क्विक चेक. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? अरे इतने क्वेश्चन तो आप अपने क्लास में टीचर से पूछ ले, तो मेरे से कोई भी नहीं पूछ रहा. चलो मेरे टाइम का बेनिफिट ले लो. इट्स मॉर्निंग 6 o'clock फॉर मी, 6:15 नाउ. यही पूछो सर आप इतनी जल्दी सुबह उठ गए, आपको कैसा लग रहा है मंडे मॉर्निंग? ठीक है चलो. अतुल सर. जी हाँ सर, आई हैव वन क्वेश्चन. श्योर सर, how we can relate design thinking and critical thinking? Means we should do first design thinking, or we should start critical thinking? When we should start? So देखिए, practically if I say ना, these two should be work hand in hand. Because if you go here in the design thinking part, we have an emphasis which says that what is the problem statement you have. If I go here, what is the problem statement here? To understand this problem, we should go for the critical thinking. कि उसके फैक्ट्स क्या है, उसके एविडेंसेस क्या है, क्या वो एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या सिर्फ मेरे को ही लग रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो दीज थिंग्स वर्क हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं है कि आप पहले डिजाइन थिंकिंग करेंगे बाद में क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, नहीं. चाय बनने के बाद आप सोचेंगे अरे मैंने कुछ किया कि नहीं किया, ऐसा नहीं होगा. चाय बन रही है तब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि चाय प्रॉपर, या जो चाय टी बैग है या शुगर है या मिल्क है, पूरा बॉयल हो चुका है कि नहीं हो चुका. तो ये कहना बहुत मुश्किल है, इवन दो इन दोनों का रिजल्ट्स इनोवेशन को सपोर्ट करता है, बट ये दोनों अलग अलग काम करती हैं. इट्स टफ टू से. हो सकता है कि मैं एम्फेसाइज में ये 4 फैक्ट यूज करता हूँ, हो सकता है मैं जब प्रोटोटाइपिंग कर रहा हूँ मैं तभी 4 स्टेप्स यूज कर रहा हूँ. तो ये ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. अब वही बात है सर, देखिए सामने 2000 का नोट पड़ा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे सामने, किसको उठाया जाए ना उठाया जाए. प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मिल गई मुझे, लेकिन उठाना ना उठाना वो क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है.
तो यहां से जो आपके सॉल्यूशंस, आपको जो आइडियाज मिलते हैं, आपके प्रॉब्लम स्टेट्स मिलती हैं, आप उसको इन 4 पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम है, थिंकिंग का सॉल्यूशन है, और इसमें भी प्रॉब्लम है, थिंकिंग का सॉल्यूशन है, इसमें भी सिर्फ इतना सा फर्क है दोनों में, बट ये चलेगा दोनों हैंड इन हैंड, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं चल सकते सर। It means at every stages of the design thinking, यस we can use the critical thinking. यस यस डेफिनेटली सर। जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टेस्टिंग माय वहाँ सॉल्यूशन, पर भी देन आल्सो आई कैन डू, critical thinking. Yes, yes. then I also can do this thing, I can say critical thinking in the parallel manner, ठीक है। Okay, now let's come to the last point, innovation, ठीक है। So few things I copy pasted from a few of the content, even though thank you Dr. Amarjit for supporting me to making this presentation a little bit good, and your inputs are also already there in this particular presentation. So देखो अब बात आती है innovation की, ठीक है। सब कुछ हो गया, सोच लिया, कर लिया, बना क्या? वो कहते हैं ना कि देयर इज अ पॉइंट कि कुछ लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, उनको समझ में आता 2%, कुछ लोग 2%, 2 मिनट पढ़ते हैं, उनको समझ में आता 200%। I give you one example. In my class, when I was in beginning of my career, Accenture, there was a lady with us. She was girl, and in the training she has a habit. In the training she always sleep, and she sit on the front end and she sleep like this. But one thing is good. At any point of time, if you say, "Hey, you are sleeping," she know that what the teacher is telling. We're surprised that how she know, and everybody says she's sleeping, but she know that what is going on in the class. So now the innovation says, and the word innovation means it's a Latin verb which means a renew. नया कैसे करें, ठीक है, नया कैसे करें। Now innovation doesn't mean कि आपको प्रोडक्ट ही नया बनाना है या प्रोडक्ट को ही नया बनाना है। नो, it can be process, it can be product, or it can be a service. Anything you can do it. Remember the example of the TV remote, वो innovation है। उन्होंने नया प्रोडक्ट बनाया, एंड नाउ दे हैव एनहांस्ड इट कि आप अपने मोबाइल पे टीवी यूज कर, रिमोट यूज कर लो। घर का रिमोट बच्चे फेंक देते हैं, रिमोट खराब हो गया, मोबाइल पर रिमोट डाउनलोड करो और यूज करो। व्हाट इज दैट? दिस इज इनोवेशन, एंड इनोवेशन सेज your efficiency should be increased, your output should be increased with the minimum inputs. This is what the innovation. But again, I'm adding one more word, your innovation should be sustainable. Otherwise market में कोई भी आपके आइडिया पे पैसा नहीं लगाएगा। Believe me, you go and watch Shark Tank again. I never watch Shark Tank, but I watch just in the shorts and in the YouTube shorts, or a little bit on the some interviews. If you see, the main fundamental in that part is that how much sustainable you are, कितने साल तक आप चला सकते हैं इसको। Now, two things, invention and innovation. Now, have you remembered it? Idea, prototype and test. आपकी डिजाइन थिंकिंग से निकल के आता है ये सारा कुछ। ये इनोवेशन की इंजन्स हैं जो आपको सोचते हैं, बताते हैं, करने के लिए प्रोसेस करते हैं। And when you build this, and when you convert, or when you add your technology on that part and give to the customers, it become an innovation. Important, बहुत easy है। मेरा favorite topic से innovation always be, ठीक है, because I remember the last time when I gave a session in your institute, same topic I pick up. This is what innovation evolution, कि वो बना कैसे है, पिक्चर में कैसे है, ये it is very 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 important. If I say, लोग ना 2 तरह से खेलते हैं, या तो इमोशनली या फिर प्रैक्टिकली। हमें we love our पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि हम उनसे इमोशनली अटैच हैं। मेरे पापा ने मुझे, जब मैं 3rd या 4th ईयर का था, मुझे एक ट्राउजर ला के दिया। वो ट्राउजर मेरे पास आज भी पड़ा है। मुझे पता है मुझे पूरा नहीं आएगा ट्राउजर, ना मेरे बेटे को पूरा आएगा, बट स्टिल आई कीप इट, क्योंकि आई एम इमोशनली अटैच विद दैट। मेरी कंपनी जो मैंने फर्स्ट इन माय करियर मैंने ज्वाइन द फर्स्ट कंपनी, मेरे पास आज तक उसका बिजनेस कार्ड पड़ा हुआ है। इट्स मोर देन नाउ 7 to 8 years मैंने छोड़ा उस कंपनी।
लेकिन आई एम इमोशनली अटैच। अगर आज भी कोई बोलता ना, अरे मैं उसको, अच्छा जल्दी जाएगा, मैं भी उस कंपनी में था, मैंने इतने साल काम किया। दिस इज व्हाट इट्स इमोशनली सेज हियर। Okay. And what is the meaning of the functional here? Functional, when you improve something in the process, then it called the functional part here. Okay. And in the innovation, only important point is that you are reducing the product by minimizing or removing the unnecessary from there. I'll give one example in that part. Okay. Car services is a best example in this part. पहले जो कार्स आती थी उसकी सर्विसेज में बहुत खर्चा होता था। देन द कंपनीज इंप्रूव 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 एंड इंप्रूव एंड इंप्रूव। नाउ आपको तकरीबन साल भर भी अगर सर्विस नहीं कराओगे तो भी चल जाएगा। सो दे रिमूव अननेसेसरी पार्ट, उसमें से जो नहीं है सब हटाते जाओ। इट शुड बी जीरो, लेकिन कभी जीरो नहीं होता। वो कहता ना कि बाय अ लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी यू विल नेवर गेट अ डेथ। इंश्योरेंस लेने का मतलब है कि आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो जाएगा। देयर इज अ कंसेप्ट इन द डेटाबेस, normalization. I still remember because this is one of the best example I pick up. What normalization says? Normalization says कि you are reducing your data or you are working on a data in such a manner कि उस पर duplicacy ना हो जाए। Duplicacy को कम करना is a normalization. But remember कि आप उससे duplicacy zero नहीं कर सकते। You are going to close to zero, but never on zero on that part. This is what the concept says. And hence in the product process should be infinite. आपके इनपुट्स कम होने चाहिए और आपके आउटपुट्स बढ़ते 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 रहने चाहिए। Nowadays we are introducing or we are installing the solar panels at our house कि भाई वहां से लाइट आएगी। I still remember my mother cook in the solar cooker. वो बड़े बड़े अटैचेस से आते थे जिसको शीशा रखो, अंदर दो बर्तन रखो, खाना बनता था। What was that? That was an innovation and that was sustainable innovation. वो आज भी चलता है अगर आप चलाना चाहें तो। But problem क्या है ना, we are in the so modern life nowadays, we don't want to be go for that. अरे कौन धूप में इसको, I still remember मेरी मॉम कहती 11 बज गया धूप यहाँ आगे इसको ऐसे मोड़ दो, 1 बज गया धूप आगे इसको यहाँ मोड़ दो, 2 बज के इसको यहाँ मोड़ दो। And after the evening when we open that boxes, dal was ready. So how much efforts we save? Benefits are infinite on that part. हमने आलू बनाए हैं, हमने दाल बनाई है, हमने चावल बनाए हैं उसमें, हमने खीर बनाई है उसमें, बिकॉज वी आर यूजिंग द एक्चुअल इनोवेटेड पार्ट। था बॉक्स था, वो अटैच ही थी, बॉक्स ब्रीफ के जैसा था, उसको थोड़ा केयरली उसको रखना पड़ता था। आई गेस दैट टाइम इट वाज 1000 और 1500-1200 कुछ का था वो, बट इट वाज सो 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 गुड प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट innovation. And if you want to do innovation, you have to be consider these 5 points. The product you are building should be cheap, but don't compromise with the quality. आज की दुनिया क्वालिटी पे बहुत ज्यादा मरती है। आईफोन कितना भी महंगा कर लो, क्योंकि उसकी क्वालिटी है वो लोग उसको लेते हैं। अब मैंने कहा सर आप तो कह रहे चीप और ये तो कॉस्टली हो गया। हाँ मानता हूँ कॉस्टली, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। cheap doesn't mean कि आप you are violating its quality principle. No. Cheap means it is easy for everybody to be used. I give an example. Uber was there. Uber introduced Uber, what I can say, share Uber, right? Share जो share करके जाते थे. What was that? That is was to make the things cheapest, better. How your solution is better than other solutions. This is another important point. Fastest. जल्दी से जल्दी बताओ क्या हो सकता है। Your product should be fastest to give that. I'm not saying कि वो सब कुछ बताए fastest, नहीं। जिस domain में in the domain you are building that product, it should be give you the fastest results. And again, sustainable. कुछ हो ना हो ये होगा ना तो आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं आराम से, क्योंकि यही चीज है जो आपको लंबा लेके चलेगी। I am again telling you, this is the fundamental of anything nowadays. If you want to survive in your industry,
You want to be then you have to make sure that you are using the resources which can make you sustainable. अगर आपके कॉलेज में जो आपके टीचर्स हैं, if they're not doing this lectures, they're not doing the self study, वो सस्टेनेबल नहीं है. उनको बोला जाएगा ठीक है मैडम हो गया आपका काम, जाइए. सर आपका काम हो गया, आप जाइए. To survive them, they are making a sustainable part. They're reading a lot of things and disruptive, which change the way of thinking and way of using. Uber is example of this disruptiveness. मतलब आपने कोर को ही चेंज करके चेंज बिल्कुल अलग कर दिया. मोबाइल फोन काइंड ऑफ अ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, क्योंकि उसने कैमरास, अलार्म क्लॉक, लैंडलाइन सबका काम खत्म कर दिया. इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन. बट ऑलवेज रिमेंबर, वी आर ह्यूमन बीइंग. डोंट टेक इन द negative side or the destructive side. It's a disruptive, not the destructive. Please. कई बार होता है कि बोलने में और पढ़ने में लगता है कि हाँ सर आप बोल रहे हैं, लेकिन हमने समझा कुछ और. So it's a disruptive one. Okay. So with this, I am done from my side. Anybody has any question, please ask me, guys. अब तो पूछ लो. And if you want to connect with me, you can connect me on the YouTube. My LinkedIn ID and my contact number is there. Let me post that in the chat window as well. So किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी को अटेंडेंस नहीं देना आज के सेशन का. Yes, students, if you have any questions, you can ask. I still remember there was a rule in our college. Again, I'm talking about the my MCA part. If any guest lecture happen in our college now, after that we have to be submit a assignment on the A4 sheet, or within the 1 day we have to be submit. After that we get attendance. कि अगर आपको समझ में आपने कुछ ठीक है, that's fine कि इंटेलिजेंट बनाएगा, बाकी सब कॉपी करेंगे. But when you're copying, you will be getting something in your mind. Yes. So only after that we get attendance. मैडम बोले कि नहीं तुम्हारा असाइनमेंट नहीं आया, और अगर कॉपी पेस्ट मैडम को मिल गया तो वो भी गया, जिसने दिया वो भी गया, और जिसको लिया वो भी गया. ठीक है. So guys, this is my LinkedIn ID if you want to connect with me, my YouTube channel as well, and my WhatsApp number from the both India and UK. India number is not in the progress for the calling at point of time, but on the WhatsApp I'm 100% available. In case you want to be connect me again, no doubt you can anytime connect me. Okay, thank you so much once again for giving time, chance, and once again, sir, thank you for this opportunity. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Hema ma'am. Yes, sir. Mhm. Thank you, sir, for such a wonderful session we had. As students have no query, that means they have understood very clearly, because it was quite interesting and it was very simplified way of explaining the things. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Have a nice week. Have a nice weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, participants. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Recording बंद कर दीजिए. हाँ.